Good evening, namaskar, and welcome to Eyeway Encounters. Today our session is on accessibility and हमें कई सालों से जैसे डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है और ऑनलाइन एक्टिविटी सब शुरू हुआ है, तो काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लोग अपने स्क्रीन रीडर लेके काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग एप्स हो या वेबसाइट्स हो, रेलवे का वेबसाइट हो या पेटीएम हो या जो भी कई ऐसे वॉलेट्स हैं जहां पर हम लोग इंडिपेंडेंटली एक्सेसिबल रूप से काम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार वी हैव प्रॉब्लम्स विद various platforms. So, and then we have been individually at various levels filing our complaints. We have been calling the customer service officials and, very difficult situations. We've been using Twitter, we've been using Facebook, and some of us have had minor successes, but mainly it's been a difficult path for all of us when it comes to digital access. Halanki, technically, on a digital world, we blind people should find it easy to move around. But because of the lack of understanding of accessibility and the need for it, most platforms are inaccessible. So I'd like to introduce our three guests today. They're not guests, hum mein se hi hain, but let me, for technical reasons, call them guests for the moment. Amar Jain is a lawyer. He used to be in Mumbai. He's now relocated to Delhi. Turab Chimtanwala, he is also a lawyer. He is based in Mumbai. And Rahul Bajaj, he is a lawyer. He is based in Delhi. And the three of them have started this initiative called Mission Accessibility. And they have done some initial work and they intend to carry this forward. But today's session is basically to quickly know what they are doing. And also it's an opportunity for us to share what are the accessibility challenges, digital accessibility challenges that we face. आज एक हमारा मौका है कि हम भी अपने जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का जो challenges हैं उसके बारे में शेयर करें। तो मेरा दो तीन रिक्वेस्ट है। एक तो हर वक्त एक ही व्यक्ति काम करेंगे, बात करेंगे, और only one person will speak at a time, number one. Number two, keep the talk brief. ऐसा ना हो कि हम लोग 5 मिनट बात करें और एक ही बात करें. So try and keep our intervention to just 1 minute or 1.5 minutes max. वो एक बात. दूसरी बात, if somebody else has already spoken about the issues that you are facing, then please don't repeat it, because उसका कोई फायदा नहीं हो, किसी को फायदा नहीं होगा, आपको भी फायदा नहीं होगा. So please don't repeat, number one. Number two, keep your intervention short. और अगर आपको कुछ बोलना है तो press Alt Y or raise your hand. And Shabnam or Ketu will unmute you and then you can speak. So we will be and hopefully if all of us follow the discipline, we will all have an opportunity to share our unique problems. So welcome Amar, Turab and Rahul. So welcome the three of you, and could I request one of you to briefly tell us about Mission Accessibility and tell us what you're doing, and then we could get cracking. And this would be an interactive session right from the start. So as a beginning, I could request one of you to just give the initial opening remarks and then we can get cracking. I'm happy to. Thanks very much, George, sir, for having us. And I'm sorry that Rahul, sorry, I'm interrupting. Can you also focus your camera on your face? Right now, it's not focused. Now? Yeah, perfect. Okay. A little bit more, just a little bit more. Okay, great. That's great. Yeah. Yeah. I am sorry that it took me a little bit long. It took me a while to join. I was in a previous meeting. Thanks very much for the opportunity. What we try to do through Mission Accessibility is to really address a deeply felt need
that I am sure many of us who are people with disabilities have experienced, which is of being able to access apps and websites that we need on an everyday basis independently. Uh, a lot of us are accustomed to facing inaccessibility in the physical world, whether it be buildings that have staircases but lack ramps, lifts that do not have braille signages or auditory outputs, um, figuring having potholes or stray dogs all over the place. So those kinds of barriers we are accustomed to, and beyond a point, are inevitable in a country as large, complex, and overpopulated as ours. But there is no reason why the same should hold good as regards barriers, as regards the technological world or the digital world. This is a world that is designed by us as individuals, by people like you and me. There's no reason why barriers have to necessarily exist when we have the power to shape technology and the platform through which we interact with it. And that is really the simple insight that drives the work that we do. Now, a lot of us as people with disabilities face barriers on an everyday basis, but we just don't have the time. Like, कौन ये सब काम करते बैठेगा? कौन सर खपाएगा कि सर्विस प्रोवाइडर को 10 बार बोल ये बैरियर रिमूव करो, फिर उसके बाद हम आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। अगर लीगल एक्शन लेने की बात आई तो लोगों को डर लगता है कि कल को कुछ उन्होंने हमारे अगेंस्ट रिटेलिएट कर दिया तो क्या होगा, फालतू में कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहे। इस ये सब सोच रख के हमारी कंट्री में तो 20-20 साल तक केसेस रिजॉल्व नहीं होते, तो कौन ये सब फालतू के सर सर दर्द उठाए। These are the kinds of concerns that one has, because of which people are unable to assert their rights to live in the world when it comes to accessing technology effectively on equal terms with their able-bodied counterparts. And therefore, what we try to do is to make a concerted push on a sustained basis to get service providers to make their apps and websites to become more accessible. This involves a combination of what we call structured negotiation, which is a technique that we draw from an American lawyer named Laney Feingold, suitably adapted to Indian conditions, of course, followed by legal recourse should the need arise. And if we feel कि बात लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो फिर then we need to take some legal action in some shape or form to get them to make their platforms accessible, because we are very clear in our minds that this is not something that is just a matter of the goodness of someone's heart that they have to do. It is a legal entitlement that we have, as do all our able-bodied counterparts, and therefore all platforms must become accessible to us as a matter of legal right. So baat basically yahi hai. Now beyond this, I'm happy to talk more. Amar and Turab can add anything I might have missed initially. No, I think fairly covered, Rahul. Yeah, fairly covered. Yeah. Yeah, so I think what we'll do is we will open the floor, and people who have raised their hands, they can share. Now, we might not have solutions to the problem which people have raised. The primary objective here is not to give solutions on this program. The idea is to register the problems so that we have a whole list of problems which Mission Accessibility then can probably take forward. So, Right. किसी की problem के ऊपर there will be no charcha, there will be no discussion on the problem. If there is somebody who has got some positive experience, they can share. But the point is, we would be interested in the problems people are facing, and we would like to list them out. Am I right, Rahul? Yes. So let me give a few examples to enable people to think in the direction that we would like them to think in. When we say outline the problems that you're facing, बात simple सी है कि
ऐसे कौन से एप्स और वेबसाइट्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हो आप एज अ डिसेबल्ड पर्सन और नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स, चाहे फिर वो कैप्चा एक्सेसिबल नहीं हो, चाहे फिर वो कैलेंडर उटपटांग तरीके से है, जो कोई आपको टिकट बुक करनी है रेलवे की या प्लेन की वो नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो अनलेबल्ड बटन्स हैं, जैसे iOS एप्स में तो भरे पड़े हैं ऐसे एप्स जिनमें बटन ही लेबल नहीं होते, तो आपको याद करके रखना पड़ता है कि तीसरा जब बटन आएगा तब उसको दबाना है, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है. सो इश्यूज ऑफ दैट नेचर. And then what we will do is, once you tell us what issue you are facing, as George sir rightly points out, we will take it up with you on a one-on-one basis, and we will send you a template that you can use to correspond with the service provider in the first instance. And then we will escalate the matter going forward using different strategies that we can get into as the conversation proceeds. Yeah, Shabnam, can you get the first person to speak, please? Yes, Nitin Gupta has raised his hand. Nitin, unmute करके आप अपना challenge या experience जो भी share करना है. Nitin, can you please unmute yourself? Okay, I'll go to, no, there's somebody by the name of Noda India. आपने भी hand raise किया है, आप please अपने को mute कीजिए. Yes, good evening. Good evening, Kishore. Hi, Evening. how are you, everybody? Yeah. All Okay. good, thank you. First of all, I'm thankful to Eyeway for conducting particularly this activity. And I'm also thankful to all the three panelists who have taken this initiative because it was much needed initiative. And मैं particularly दो जगह पे ये encounter कर रहा हूँ problem. एक है SBI का क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए जो ऐप है उसके सारे चीज़ों को ये करने के लिए वहाँ पे टाइम टू टाइम वो लोग टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट करते रहते हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए लिंक जो होता है वो एक्सेप्ट हम लोग अपने आप नहीं कर पाते, किसी साइटेड का हेल्प लेना पड़ता है. तो ये वहाँ कौन पे से ये iOS एंड्रॉइड ऐप की बात चल रही है नहीं, वेबसाइट पे? मैं iOS प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ. iOS प्लेटफॉर्म पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड. हाँ, तो वो टिक आपने जब तक वॉइस ओवर ऑन होता है टिक होता ही नहीं है. आई हैव टू टर्न ऑफ द वॉइस ओवर एंड गेट हेल्प ऑफ साइटेड पर्सन टू डू दैट. बाद में वो एक्सेप्ट, तब तक वो बटन डीम्ड ही रहता है. और ये यूनो लाइट एसबीआई ऐप के लिए है या कौन सी एसबीआई ऐप के बारे में? आई डोंट, उसका नाम सिर्फ मेरे को मेरे एप्लीकेशन मेरे इसमें सिर्फ एसबीआई कार्ड ही आता है. नहीं, ऐप का नाम एक बार आप देख करके अगर बता पाए, क्या नाम Just a minute. ऐप Hold का on. एसबीआई कार्ड है क्या? Can I make a quick point, Rahul, here? हाँ. ये SBI card is a separate entity, which is your SBI उसका card. नाम एसबीआई कार्ड ही है सर. IPO आया था. Okay. This is for credit cards, and they have got their own app. What is that app called? It's called SBI Cards only. एसबीआई कार्ड. अच्छा, ठीक है. ओके. और दूसरा मैं जो चैलेंज फेस कर रहा हूँ वो हालांकि वन टाइम है, लेकिन वैसा भी क्यों हो, जो एमवे का एप्लीकेशन यूज करना होता है मुझे राइट. अपने बिजनेस बिल्डिंग के लिए, वहां पे भी टर्म्स एंड कंडीशन अपने आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम लोग iOS प्लेटफॉर्म पे. एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे भी सेम चीज है, किसी साइटेड की मदद लेके करना पड़ता है क्योंकि और वो वन टाइम है. उसके बाद में अगर लॉगिन करके टच आईडी करके रखता हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स है जिनका मैं टाइम टू टाइम मेरे यहाँ से लॉगिन करके ऑर्डर प्लेस करता हूँ. तो जब भी डिफरेंट किसी का लॉगिन करना है मुझे तो वापस वही हर बार टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ता है. अब ये ऐप किस चीज के लिए यूज की जाती है? एमवे का ऐप है जो अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है. ओके. उसमें से किसी को हम लोग कस्टमर के तौर पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने नेटवर्किंग के लिए स्पॉन्सर कर Rahul, सकते MBA हैं. is a multi-level marketing. Yeah, it's a multinational, Direct multi-level. selling. Yeah, it's a direct selling company. डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. It's an American company, and they actually और have multi-level. मैंने वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के वीडियोस निकाल के उनको भेजे, ईमेल्स लिखे, सब कुछ किया, लेकिन देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम देयर एंड. So we can possibly try it through Amway Opportunity Foundation. That Yeah, could be one route. हाँ, Yeah, मैंने yeah.
मैंने मेरा बॉम्बे के साथ उनके साथ कनेक्शन है, वहां पे भी बात किया मैंने। अभी लेट्स सी, दिल्ली से सब कुछ हिलता है तो दिल्ली से हिलाओ जॉर्ज भाई। Yeah. Now I think we have locked the problem. I think we move to the next person. Thank you, Kishore. Sure, thank you. Yes, I made a note of it. I'll get back to you. Yeah, we are also recording this, Rahul. So we'll share the recording with you. Great. Yeah. Okay. Next, who's next, Shabnam? आशुतोष Yes, ma'am. अनम्यूट करके। हाँ जी। मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि जो दैनिक भास्कर की वेबसाइट है उसमें जब वी से विजिटेड आना चाहिए, जबकि वी से विजिटेड नहीं आता, जो उनसे मैंने न्यूज खोल चुका हूँ मैं। और जैसे कि कहते हैं कि जैसे मैंने कोई न्यूज खोली तो एक आइडियल कंडीशन में न्यूज की हेडिंग पे पहुंचना चाहिए, पर वो पे नहीं, वहां पे नहीं पहुंच रहा। ऐसी ऐप के साथ भी है, वहां पे अनलेबल बटन काफी सारे हैं। और iOS या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड, उसमें ये चीजें हैं। मैंने उनके डेवलपर को से कांटेक्ट किया था, उन्होंने बोला था कि वीडियो और भेजना। मैंने दोनों के ऐप के भी और जो वेबसाइट है दोनों का वीडियो भेजा था, और बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी थी। मतलब कांटेक्ट हो भी गया था, पर वो मतलब उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब वापस में रिप्लाई नहीं करते। पहली बार तो उन्होंने, मैंने जब उनको नंबर लिख के दिया था कि पूरा मेल लिखा था, तो उन्होंने कांटेक्ट किया था। बाद उन्होंने बोला था कि मुझे वीडियो भेजना, मैंने वीडियो भेजा, पर उसके बाद भी कुछ सही नहीं हुआ। तो आपका नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष। सिंघल। जॉर्ज सर, ये मैं नोट तो कर रहा हूँ, बट आइडियली जब लोग अपना कंप्लेंट बता रहे हैं, they should also give us an identifier through which we can reach out to them. Yeah. So नाम और ईमेल एड्रेस अगर लोग अपना बताएं और फिर अपना कंप्लेंट सामने रखें तो बेटर रहेगा, ताकि आई कैन मेक अ नोट ऑफ इट। तो आशुतोष, आपका ईमेल आईडी क्या है? आशुतोष सिंघल। आशुतोष सिंघल। मैं स्पेल ASHUTOSH SINGHAL 009 @gmail.com। @gmail.com. ठीक है। We'll और जो also have किशोर, registration database, right? We'll be able to pull it from there. Yeah. कौन सा So डेटाबेस? no, we'll have their numbers, so we can call them up later. So I think a faster way would be that we will just note the names of the people who have spoken, and we'll offline call them and get their email IDs and share them with you. There is a possibility that some of them have received the Zoom link through their friends and they haven't registered and they're here. Okay. So I would suggest that they also put their email ID and phone numbers in the chat, so we can copy paste them for our Yeah. reference. So all of them might not be able to do it. They can even say जो out. लोग नहीं कर पा रहे वो अपना बोल सकते हैं, जो कर पा रहे हैं वो लिख सकते हैं। Right. जॉर्ज सर, हाँ, एक छोटा सा लास्ट इंटरवेंशन फ्रॉम माय एंड। और ये हम लोग अभी आजकल थोड़ा मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसके भी एप्स जो हम यूज करते हैं उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मेरे पास जो दो है, सैमको और मोतीलाल ओसवाल, दोनों में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। Motilal Oswal, and what's the other one? सैमको, SAMCO, सैमको। Okay, all right. Thank you, Kishore. Thank you, Kishore. Sir, Kishore, can you Yeah, also? I will put my email ID in chat. Okay, great. Who's Sir, next? I have one problem also. Who's this? दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है। नहीं, कौन आपका नाम? ये आशुतोष जी बोल रहे हैं अभी। अच्छा, बोलिए। सर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.du.ac.in, उसपे मैं सिलेबस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, पर वहां से सिलेबस डाउनलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो वेबसाइट इनएक्सेसिबल थी, मतलब उस एरिया में इनएक्सेसिबल थी। और काफी जगह मैंने ट्राई भी किया, वो वेबसाइट काफी ज्यादा इनएक्सेसिबल है। ओके। यस सर। This, I think we need to take it up with the Equal Opportunity Cell, I guess. Yeah, thank you, Asutosh. Let's move to the next one. विकास गुप्ता। विकास, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो। बोलिए। Am I audible? Yes. हाँ जी, Yes, yes. हाँ जी, बताइए। Very good evening, sir. I am विकास गुप्ता from Delhi, Bharinpura। और सर, अगर मैं एक्सेसिबल इंडिया की बात करूँ, एक मिनट, आप आपका माइक के अंदर बात कीजिए। आप इधर उधर हिल रहे हैं, जरा लगता है माइक हिल रहा है या आप हिल रहे हैं? अब सही है? हाँ, अभी सही है, अब सही है। हाँ सर, अगर मैं एक्सेसिबल
इंडिया एक्सेसिबल वेबसाइट्स की बात करूं तो सर मैं ये देखता हूँ कि जितनी भी जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, अगर मुझे आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, या लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करना है, सर सब में एक प्रॉब्लम कैप्चा की है, और जो उनका सॉल्यूशन है वर्क ऑडियो सॉल्यूशन होता है, या तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, या फिर वो जो है हमारा स्क्रीन रीडर उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, एक तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स में। ऑल राइट, पॉइंट टेकन, थैंक यू। और कुछ? सर और जैसे सर नेटवर्क मार्केटिंग की, जैसे मैं भी एक ऐप यूज करता हूँ RCM, तो सर वो भी सर इनएक्सेसिबल है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम मतलब उसमें कुछ बस ये देख पाते हैं कि हमारी परचेजिंग और हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ है, लेकिन हम उसमें अपने जो ग्रुप्स हैं उसकी परचेजिंग नहीं देख पाते। नहीं, क्या और हम नाम है इसका? RCM? इसको यस ये सर, ये एक ऐप है RCM नाम की। यस सर, राइट कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ पूरा नाम क्या मार्केटिंग। होगा? सॉरी सर, पूरा पूरा नाम नाम? क्या? सर राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अच्छा, तो iOS RCM ऐप है, iOS नहीं iOS सर, या एंड्रॉइड? ये एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, तो ये भी आप लोग अपने आप से ही अगर हो सके तो प्लीज बताइएगा जब आप बोलते हैं ऐप की, क्या आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं या iOS? और ठीक है। सर एक, यस सर, हाँ, और सर बोलिए बोलिए। एक हाँ। कॉलम जैसे ICICI बैंकिंग की जो ऐप है, हम्म। हालांकि वो अच्छा, अपडेट एक मिनट, एक मिनट रुकिए। RCM में आपने क्या इशू बताया वो मैंने नोट नहीं किया, एक बार प्लीज फिर से बताइए। सर जो RCM की ऐप है ना, हम्म। उसमें हमें इशू ये आता है कि हम सिर्फ अगर हम देखेंगे तो हम्म। खुद हम यही देख पाते हैं कि हमने परचेजिंग क्या की है, मतलब परचेजिंग कितने रुपए की है, और हमारा कितना बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है। बाकी हम्म। अगर हम उसमें अपना नेम ऐड करना है या हमारे ग्रुप की परचेजिंग देखनी है, तो वो सर हम नहीं देख पाते, वो हमारा स्क्रीन रीडर अनाउंस ही नहीं करता। ओके। और दूसरा आप ICICI का बता रहे थे? यस सर, ICICI आई बैंकिंग की जो ऐप है, तो राइट। उसमें मुझे काफी दिक्कत आती है उसे यूज करने में। मैं नहीं देख पाता कि मेरी कितनी FD है, या अगर मुझे FD रिन्यू करनी है तो मैं खुद से नहीं कर पाता, मुझे ऑडिट की हेल्प लेनी पड़ती है। ये एंड्रॉइड ऐप की बात कर रहा हूँ मैं, ICICI बैंक की जो आई बैंकिंग की जो ऐप है। समझ गया। और उसको क्या बुलाते हैं? ICICI ही बोलते हैं आपको? आई मोबाइल, आई थिंक। आई मोबाइल बैंकिंग। आई मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। यस सर, और सर इसमें क्या है कि मैं मतलब जैसे मैंने बताया कि FD वगैरह नहीं देख पाता, और हाँ। एक चीज बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी को मनी सेंड करना है, और हम्म। मैंने UPI चूज कर लिया, तो उसमें ऑप्शन आता है कि पे फ्रॉम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट चूज भी कर लिया, सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, कम से कम मुझे 20-30 बार टच करना पड़ता है सेंड बटन पे, तब वो UPI पिन मांगता है, अदरवाइज वो UPI से सेंड ही नहीं होता सर। और सर मैं लास्ट जो मेरा डाउट है वो अमेजोन से रिलेटेड है, अमेजोन ठीक पे है। जो है सर, उसमें इशू ये आता है कि अगर मैं जैसे अमेजोन यूज कर रहा हूँ, तो एक तो जैसे मुझे मेरा रिवॉर्ड्स देखने हैं, तो रिवॉर्ड्स देखने के लिए जो पेज है वो थोड़ा इनएक्सेसिबल है। दूसरा, जब भी मैं पेमेंट करनी होती है ना, लास्ट में जैसे पेमेंट के लिए करता हूँ, तो एक तो वो कहता है या तो स्वाइप करो या फिर चेंज टू, वहाँ चेंज का भी ऑप्शन आता है कि अपना जो पेमेंट का ऑप्शन है वो चेंज करो। तो जब मैं चेंज पे करता हूँ तो उस पर क्लिक भी नहीं होता, और जब प्रोसीड का जो ऑप्शन है मैं हम्म। उस पर क्लिक करता हूँ तो उस पर भी सर क्लिक नहीं होता। वो एक इशू है मतलब हम लोगों के लिए अमेजोन पे। ये ऐप है या वेबसाइट पे? सर ये वेबसाइट नहीं है, ये एंड्रॉइड ऐप है, एंड्रॉइड ऐप की बात कर रहा अच्छा, हूँ। एंड्रॉइड ऐप, ओके। यस एंड्रॉयड सर, ऐप पे प्रोसीड बटन नहीं चल रहा, और दूसरा कौन सा? चेंज बटन नहीं चल रहा है। वहाँ जैसे जैसे मुझे पेमेंट चेंज करना है तो वो चेंज करेगा नहीं, वहाँ पे टॉक बैक नो डिफॉल्ट बोलता रहता है। गॉट ये इट। issue है। थैंक यू विकास। Who's यस सर, next? मिस्टर थैंक यू। केन, विकास जी ने अपना लिखा है ईमेल आईडी, चैट में नहीं तो अभी बता रहे हैं। विकास सर गुप्ता, अपना सर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, सर ईमेल आईडी वैसे है ना, जो बताओ, रजिस्ट्रेशन हुआ था मैंने उसमें लिखी हुई है, बाकी अगर आप लिखेंगे तो आप लिख लीजिए। मैं ईमेल बताइए आईडी बताइए। आपको करने देता हूँ। विकास गुप्ता VIKAS हाँ हाँ। GUPTA हम्म। 1995 हम्म। @gmail.com। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू okay. सर। Mr. Kane, please go ahead and ask a question. Is हेलो सर, Keto सॉरी somebody सॉरी also noting these things? Yeah, George, this will be downloaded as a text. All सर, everything that is there and whatever they're repeating, she's noting it down. Okay, आई okay, एम thank ऑल्सो you. मेकिंग अ नोट ऑफ एवरीथिंग। Yeah, Yes. हेलो okay.
Sir, Yes. Anji. Mr. Ken. and sir, last thing sorry for intervening. So I want to also remind you about the inaccessibility of Zoom on Android, क्योंकि सर अगर हम जैसे मैं वीडियो ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो इसमें जो मेरा है वो मतलब रोटेशन ऑन है तो अपने आप ऑन हो जाता है, और जिसके कारण जो इसके ऑप्शंस हैं वो जल्दी से मिल नहीं पाते, और जो है मतलब मुझे म्यूट अनम्यूट करने में काफी दिक्कत होती है सर। आज Zoom भी पे आपने अपना मोबाइल स्क्रीन ओरिएंटेशन लॉक करके देखा? है, हाँ रोटेशन वैसे मैं मेरा लॉक ही रहता है, लेकिन जूम पे ऐप पे जैसे भी मैं कोई मीटिंग चालू करता हूँ तो अपने आप वो ऑन हो जाती है रोटेशन। जूम ऐप पे सर ये मोबाइल पे दिक्कत आती है यूज करने में, लैपटॉप तो में ये तो I guess, is this a bigger issue, Amar, or can this be addressed by the user? No, I think Rahul, this may possibly be a default setting for Zoom because possibly sometimes when you want to show the videos in landscape, like Netflix में कैसे होता है ना, automatically landscape में switch कर जाता है. So possibly something of that sort. I don't know whether that's a choice of Zoom by default. Inaccessibility तो नहीं बोलेंगे, I don't think. सर लेकिन ये जो इशू है ना, इसके कारण सारे इंफॉर्मेशन या सारे ऑप्शंस वो मतलब मिल नहीं पाते जल्दी से। So we can, ठीक है, विकास जी हम चेक कर लेंगे इसका क्या कर सकते हैं। Yes, thank you sir. Thank you. Okay. Mr. Mr. Kane, Mr. Kane, please unmute yourself. I'll have to move on to another person. Yeah. Sorry, I was keeping quiet because your discussion was still going on. Yeah, please carry on. Kept quiet. Please carry on. Yeah. So I'm an iOS user. Can you guys hear me well? Yes. Yeah. Yeah. So I use iOS, and all the travel applications, you name it, Make My Trip, Ease My Trip, iBibo, etc. All of them are totally inaccessible. Inaccessible in the sense you're not able to choose the date properly. You're not able to select the when trying to book a flight, you're not able to select what kind of class you want, how many Sorry, what passengers. app are you talking about? All of Travel them. apps. All of them. All travel apps. Travel apps. All travel apps. Yeah. Okay. Yeah, okay. So I can't be unjust to any one of them, but I've had a good experience with Expedia. But Expedia charges fee for booking anything through them. I think it's around $250 extra. So convenience fee. But Expedia is totally accessible compared to all these other apps. And I've had good success with Swiggy. So Swiggy has. So become, just on the travel app thing, there's one app called Sky Scanner that I use, which is good. NAB Delhi had done a session on it, which is available on YouTube. The only problem with the app is that after you've chosen the desired flight, when you go to book it, it eventually takes you to a third-party website where you need to place the order, so that it can be Ease My Trip, Expedia, etc. So then, if those third-party platforms are inaccessible, then that is where you get stuck, according to me at least. Uske baad you can't do much, but wahan tak you can access it well. Okay, got you. All right. The next point is Swiggy. that there has, Swiggy. I've had good, a good experience. I mean, I would say 80% is accessible. Yeah. I did get in touch with a few developers there, not directly, indirectly, Right. through various sources like Twitter, LinkedIn, all these social media. And were they websites. responsive? Yeah, there were responses, and there has been significant change on the app for iOS for Swiggy. So you're able to add stuff to your cart. You're able to go to your cart and check out the items that you want. Right. And the third, Zomato is one I'm still having challenges. I would like to have a choice between using Swiggy and Zomato, but Zomato for iOS sucks. Totally is a pain in the ass. And I have also tried reaching out to them, but they are a very ignorant lot. There has been no progress in terms of a revert, and I have shamed them. I have shamed them on social media, but they seem to be too pig-skinned to react. Right. So and then I have an app called Dunzo, which I was using.
this app I was using 6 months back. It's called DUNZO, Dunzo. Yeah. Dunzo has, before, let me just stop you there on Dunzo. They have actually made a concrete commitment to us that they are going to take this up between October and December. We had sent them a legal notice. There was a lot of back and forth. We did a session with their engineers also. So they will take it up between October and December. Okay. So I don't need help with Dunzo then because you guys are following it up. And Swiggy also, I had a few minor challenges in terms of accessibility. And I was able to get my message across, especially when I'm ordering something for a friend and the delivery address is different. It does not allow me to add the mobile number of that contact. Whereas Right. in Dunzo, it offers that. So once you put in the delivery address, it asks for the contact number of that person receiving the delivery. In Yeah. Swiggy, that's not happening. Whereas Zomato is Not totally happening popular. for blind people, or they don't have an option at all. No. Swiggy doesn't allow us. The location doesn't change for us. It's for us because it takes a default location, current location, and it's very difficult to change. No, but he's saying something different. No, he's saying you can't enter your mobile number of the person who's making the order. No. He's Well, saying that if he needs to send it to you, for example, if he's ordering from Oh, Bangalore right. for you, he will not be able to put your Yeah, details your in. location would Yeah. not This be was encouraged. a challenge I faced a few days ago. Also, I had to get someone to do it for It me. is going to get sorted, guys. Just FYI. Yeah, but you know what happened? One of the Excuse me, exhibitors. Yeah. may I say something? Yeah. Please go ahead. Before some few days ago, I ordered for a friend. I am in Dehradun right now, and I ordered for Delhi. And when I put my number, my friend's number there, at that time I ordered that thing. Okay, so this problem I did not face. So You are I don't using know that Android or how. iPhone? No, I'm using Android. So In it's iPhone, this also problem is there. operating system difference. On iOS, you Okay. do have this problem. Yeah. And Okay. Mujtaba, just to respond to you, Swiggy is still working on its app. A couple of fixes are going to come soon. Yeah, and just FYI, the workaround for this is where it says directions to reach, there you put the person's mobile number. And after that, you can go to the chat and go to help, and I need to add a new number. You click on that and put that in chat. So that's the workaround. So it's an additional 2 steps that you need to take. So, Right. Mustafa, anything more apart in addition to all this? George, there's a lot on my mind, but I think I'll take up too much of the time on the call. So, yeah, for now, the pain areas have been addressed. As I Yeah. said, all travel apps have a challenge. Zomato needs to be really doing something about it. And the last but not least, I would want to sign into my Times of India account so that I can post comments on the news articles. So the sign in button is a mouse over thingy, and I'm using NVDA. I don't plan to use JAWS just to use one particular website to sign in. So I have written to This their is the editors. website. Yeah, Yeah, Times yeah, of yeah, India sign. yeah, the website. So the sign in, see, when you go to any article, news article below, you have a comment section. It says post your comment without signing in or sign in using Google, Facebook, and email. So I have an email registered account with them, and I'm not able to hit enter on that, click enter on that, and Got it. sign in. Got Yeah, it. so that's the. But it's not a pain challenge. However, I thought I'd just let you guys Right. know about it. Thanks a lot. Thanks, All right. Mustafa. Who's Mujtaba, next? do we Thank you, have guys. your email address? Can you, I mean, Amar knows you, of course, but can you just give me Yeah, your email address nonetheless? sure. It's Mujtaba M. That's MUJ Hmm. TABAM Hmm. @gmail.com. Right. Thank you. Yeah, Okay. he's got my number. Yeah. Okay, thanks, guys. Thanks. Take Okay. care. Thank you. Bye. Bye. Pallavi, please ask your question or Yes, this is Pallavi from Mumbai. Good evening to all. Good evening. हाँ सर मेरा इश्यू है गूगल ऑथेंटिकेटर जो एक एंड्रॉइड का ऐप आता है व्हेन वी आर यूजिंग 2 स्टेज ऑथेंटिकेशन तब वो यूज होता है तो वहाँ पे क्या होता है जो भी पासवर्ड आता है ना इट इज वैलिड ओनली फॉर 30 सेकंड तो हमें यहाँ पे देख के अपने पीसी में डालते वक्त इट इज टेकिंग एटलीस्ट मोर देन 30 सेकंड तो इमीडिएटली दूसरा चेंज होता है
तो वी आर नॉट एबल टू यूज इट। तो वो इशू है गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ। नहीं सॉरी, क्या तो इशू है? पासवर्ड जो वैलिड होता है, जो नया पासवर्ड हाँ, इट इज एक्चुअली गूगल ऑथेंटिकेटर सर क्यों यूज करते हैं पता है हाँ, आपको या मैं बता नहीं दूं? मुझे नहीं मालूम। हाँ राहुल, एक्चुअली टू सर स्टेप गूगल वेरिफिकेशन है ओके। हाँ बेसिकली। सो हाँ क्या हाँ होता है, जब आप लॉग इन करते हो तो आपको एक कोड डालना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर कि आप यू आर ऑथेंटिकेटेड, सो दैट जो कोड डिस्प्ले होता है दैट इज ओनली डिस्प्लेड फॉर 30 सेकंड्स। ओके। हाँ So you have to put it within 30 seconds, otherwise a new code gets generated, तो आपको नया कोड डालना पड़ता है। पल्लवी, तो एक चीज आपने कोड आपको मैसेज किया जाता है? नहीं, वो ऐप वो में ही ऐप पे आता डिस्प्ले है। होता है। ओ, हाँ तो फिर ऐप से निकाल के बगैर लगा डालना कहाँ पड़ता है? लैपटॉप अपने पे अगर पीसी आप में लॉग इन डालना कर रहे हो पड़ता फॉर है सर। एग्जांपल, ओ आई सी। So you हाँ get timed out. Basically, you get timed out. या वो तो मैं यस समझ यस गया, सर, वो तो मैं मीन समझ फॉर गया। ब्लाइंड यूजर के लिए उन्होंने कुछ दूसरा कुछ बनाना चाहिए करेक्ट एटलीस्ट करेक्ट, दोज हु आर। गॉट हाँ इट गॉट इट। या क्योंकि एवरी टाइम आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स जस्ट पुट दैट कोड, पल्लवी ये दैट इज द टेक्निकली इशू। एक्चुअली चैलेंजिंग होगा बिकॉज ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया गया है, ये हाँ ड्यूरेशन। बट No, एक्चुअली Navajan. सर माय प्रॉब्लम इज दैट आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हाँ, और नहीं वहाँ पे समझ रहा हूँ हैकिंग मैं बहुत आपकी होता है। तो बात। एवरी टाइम फॉर ईच लॉगिन आई हैव टू टेक ए हेल्प फ्रॉम अदर राइट फ्रॉम, हाँ बिकॉज मैं वी समझ आर रहा हूँ, यूजिंग। तो समझ रहा उसमें हूँ, कुछ तो होना चाहिए ना सर अपने So लिए समझ जो रहा हूँ। ब्लाइंड यूजर yeah. है। So I ऑडियो think इनपुट होता एक एक जगह पे हम इनपुट कर सकते हैं, यहाँ से देख के वहां पे नहीं होता, स्वाइप करते ही 30 राइट सेकंड हो जाते हैं। कुछ तो ऑडियो इनपुट दिया तो भी चलेगा ब्लाइंड यूजर के लिए। राइट। हाँ आपका वहां पे हम ईमेल एड्रेस क्या है पल्लवी जी? सर राइट टू पल्लवी भिसे है, WRITETO पल्लवी भिसे। बट हाँ, पल्लवी सर बी मेरा से, आईवे बी के से आप स्पेलिंग हाँ बी से कैसे स्पेल करते हैं? BHISE भिसे @gmail @gmail। अच्छा यस आईवे के साथ है मेरा सर, मीन्स ठीक है, उनके कांटेक्ट में मैं रहती हूँ। गॉट इट। ओके ओके हाँ thank you, ओके Pallavi. Okay, Thank you, थैंक यू। Pallavi. Yeah. यस सर, थैंक यू सर। ओके अनिकेत। guys, हाँ guys, one sorry. second. Sorry to intrude. Now I'm intruding, and I'm feeling sad about it. But she can directly write to the Google Disability Help Desk. They're very Yeah, I responsive. was also going to suggest that. Yeah, and that they are very fast in taking up feedback and implementing also. So I had some challenges with the YouTube website. I had some challenges with Google Pay. All of them have been fixed. So yeah, just check out Google Accessibility. Search for contact Google Accessibility. They're there. They're live on Twitter also, and they have a dedicated web page where you can fill up a form and send them your request. Okay sir, I have not tried, maybe I will do that. Yeah, You'll definitely get a solution soon. yeah. Yes sir, Yeah, thank and you. also one other thing I should point out before we move on to the next person is that for people who would like to reach out to us if they are not able to voice their concern now, our email address is missionaccessibility@gmail.com. I will repeat, missionaccessibility MISSIONACCESSIBILITY ओके Okay sir, Thank you. थैंक यू। yes, thank you sir. अनिकेत प्लीज गो अहेड। Sir, I am having problem with Flipkart when I was ordering cash on delivery on an Android platform. They are asking for image captcha and also having problem with swavlamban.gov.in. नहीं, एक मिनट फ्लिपकार्ट में इमेज कैप्चा होता है ऑन द एंड्रॉइड ऐप। कैश ऑन डिलीवरी करते समय, कैश ऑन डिलीवरी करते हुए। आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है? यस कि समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, मेड अ नोट ऑफ इट। दूसरा क्या बोल रहे थे आप? और दूसरा ये है जैसे हम swavlamban.gov.in पे UDID को कार्ड को डाउनलोड करने के लिए करते हैं ना, तो वहाँ पे भी इमेज कैप्चा आता है। और कौन सा, आधार वाला? नहीं, Swavalamban. स्वावलंबन। Swavalamban is ऑडियो कैप्चा है। even otherwise there are a lot of I think inaccessibility issues there on the Swavalamban. Yeah, Swavalamban. that portal of course needs a relook. That's a different issue. ओके, वहाँ पे भी आपका हाँ ठीक, हाँ समझ गया। और कुछ अनिकेत जी? नहीं, ठीक है, आपका क्या ईमेल एड्रेस है? अनिकेत
KARARE6 एक सेकंड, ANIKETKARARE करारे 6@gmail.com। ठीक, थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। गैलेक्सी। दो प्रॉब्लम है। आपका नाम? नाम बताएंगे? संदीप यादव। संदीप यादव। बोलिए। पहली प्रॉब्लम तो कैप्चा वाला है जो सब लोगों ने एड्रेस किया होगा आई थिंक। बट कहाँ? आप किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं? IRCTC में जब हम पासवर्ड चेंज करते हैं, ओके, है ना, तब वहां पे जब कैप्चा डालने के लिए बोलता है तो वो कैप्चा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, वो सही होना चाहिए। और फ्लिपकार्ट में जब हम जैसे लिखते हैं, माय ने, जैसे कुछ ऑर्डर करना हो, जैसे मोबाइल लिखे तो वो बोलता नहीं है, जैसे स्पेस करके आर लिखे तो आर बोलेगा, आर लिखे तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन जैसे MOBILE लिखे स्पेस किया तो मोबाइल नहीं बोलेगा। एक चीज तो वो होना चाहिए, ठीक है। और सर IRCTC हो गया, और फ्लिपकार्ट का वेबसाइट की बात चल रही है? नहीं, ये ऐप की बात मैं कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट ऐप की बात कर रहा हूँ, है ना। एंड्रॉइड की या iOS की, कौन सी? एंड्रॉइड यूज करता हूँ तो कोई शेयर नहीं करता। ओके, ये IRCTC में जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, वो एंड्रॉइड की बता रहा हूँ, ठीक है सर। ओके, तो IRCTC का भी आप ऐप की बात कर रहे थे, वेबसाइट की नहीं कर रहे थे? जी हाँ, IRCTC का ऐप ही, मैं ऐप की ही बात कर रहा हूँ, वेबसाइट पे मैंने अभी नहीं यूज करके देखा है। IRCTC कनेक्ट की बात कर रहे हो ना आप? सर IRCTC कनेक्ट नहीं सर, IRCTC केवल है, वो ऐप ही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई सर, फ्लिपकार्ट और IRCTC। तीसरा सर, एक गूगल स्पीच जो है वो नया आया है, उसको जो अपडेट होते हैं ना, तो ऑटोटिटिस के साथ सही वर्क नहीं कर रहा सर, मतलब बहुत फास्ट पढ़ने लग रहा है, और ऐसा मतलब मतलब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और सर चौथा, YouTube उसके लिए तो आप गूगल को कांटेक्ट करिएगा, जैसे मुश्तफा जी बोल रहे थे, हमारे से बेहतर वो आपको असिस्ट कर पाएंगे। गूगल एक्सेसिबिलिटी वाली जो टीम है, उसके लिए उनको कांटेक्ट करिएगा। और चौथा, YouTube का बग नहीं है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बग है। ओके, नहीं, इज देयर एनी सोर्स की वेयर आई कैन कांटेक्ट देम? गूगल एक्सेसिबिलिटी डिसेबिलिटी आंसर टेस्ट है ना गूगल का, अब गूगल पे सर्च करिए, आपको ईमेल मिल जाएगा, ईमेल आईडी। जी सर। और सर थोड़ा IRCTC वाला प्रायोरिटी बेस में रख के ना उसको, थोड़ा सा मतलब हाँ, IRCTC का तो नोट कर लिया मैंने। और चौथा, YouTube का क्या बोल रहे थे? हाँ सर, YouTube का इंटरफेस है ना, जो बहुत बुरी तरह से चेंज हो गया, मतलब वो सही वर्क, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है एंड्रॉइड में। YouTube पे आप उन्हीं को लिख सकते हैं ना, गूगल का ही है। गूगल को लिखिए उसके बारे में। गूगल का ही है, ठीक सर। और फ्लिपकार्ट वाला सर, वो तो नोट कर लिया मैंने, फ्लिपकार्ट और IRCTC का। और बस एक मेरा सुझाव है, बोलिए, कि ये कोई एक दिन चलने वाला सेशन नहीं होना चाहिए, इसका टाइम समय समय पे होना चाहिए, क्योंकि समय समय पे बग्स आते रहते हैं ना, एक्सेसिबिलिटी का इश्यूज होता रहता, तो समय समय पे होना चाहिए। और लास्ट बात मैं कह के विराम दूंगा अपनी वाणी को, कि ये जो एप्स हैं, हॉटस्टार हो गया, वाणी, हाँ जी, बोलिए। तो हॉटस्टार हो गया, और जो भी नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम तो थोड़ा एक्सेसिबल है, लेकिन हॉटस्टार वगैरह एक्सेसिबल नहीं है, इस पे हॉटस्टार पे काम चल रहा है अभी। हाँ, तो ठीक है, बस ऐसे ही चल रहा है जी। थैंक यू सर। हॉटस्टार पे आज ही मैंने हॉटस्टार वालों को फिर से लिखा है, कर रहे हैं वो, कि उन्होंने कहा है वो जून में नया ऐप लाएंगे, तो वो एक्सेसिबल बना के लाएंगे। उसके लिए उन्होंने हमारे साथ सेशंस भी किए हैं, उनसे बात चल रही है अभी। They seem quite serious about it. आपसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? missionaccessibility@gmail.com. May you repeat? May you spell it, please? MISSION mission accessibility ACCESSIBILITY@gmail.com. Okay, thank you so much. Thank you sir, thank you. तो वाणी को विराम कर दिया, अभी अगला कौन है? हेलो दिलीप, हाँ जी, हम आपके पास आएंगे, मैं नाम लूंगी तो फिर आप अपना पूछ सकते हैं। अभी आप पूछ लीजिए, आप बार बोल रहे हैं। Excuse me, hello, thank you very much for this session. I was waiting, I have raised hand in between, many people came. My concern is that all the apps they have been listed, like Flipkart,
and Amazon. I want to know what is the remedy, how we can contact, and what is the legal provision to make Yeah. this app accessible. I want to know this. Yes, thank you so much. That is an excellent question, and I'm glad you asked us that. What's your name? Sorry? Dilip Chauhan. Dilip Chauhan Dilip from Chauhan. Ahmedabad. So, Mr. Chauhan, now your question has two parts, so I will take both of those up in turn. On the first point, in terms of okay, let me start with the legal provisions first, because that really anchors our approach in terms of what we do about it and what we can do. Now, under the Rights of Persons with Disabilities Act, Section 46, all service providers were required to make their platforms accessible within a period of 2 years from the date of promulgation of relevant rules on the subject. Okay, this act came into force in 2017, as you know. Now, the Rights of Persons with Disabilities rules, Rule 15 thereof, talks about compliance with website accessibility standards as prescribed in the Government of India Guidelines on Website Accessibility, GIGW. And these guidelines now not only cover websites but also apps, and therefore it becomes the obligation of every service provider to make their app or website accessible. And this they had to do by June 2019, because the rules came into force in June 2017. Okay, so this I am giving you a very specific provision, which is Section 46, read with Rule 15 on compliance with accessibility norms. Beyond this, there is also an obligation to make reasonable accommodation, which the Supreme Court has now clearly held, although in passing does apply to the private sector also. There is a clear non-discrimination guarantee that applies to the public and private sector under the Act. All of those can be deployed against and there is a Supreme Court judgment against in the SpiceJet case where they ordered SpiceJet to pay 10 lakh rupees to a disabled person who had been discriminated against. So even to the private sector, they have applied constitutional rights of the disabled. So from a legal perspective, we do have good grounds to argue that this inaccessibility is violative of our rights. Now, what do we concretely do? Admission accessibility, here are the steps that we follow. ठीक है, सबसे पहले तो जो भी हमारे इन्फॉर्मेंट्स होते हैं उनको हमें एक लेटर, हमारा टेम्पलेट है, हम लिख करके देते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइडर को उसको थोड़ा सा उनको कस्टमाइज करना पड़ता है ये बताने के लिए कि वो उनका नाम क्या है और उनका प्रोफेशन क्या है इन्फॉर्मेंट का। बाकी टेम्पलेट सेम रहता है जिसमें हम सर्विस प्रोवाइडर को बताते हैं कि accessibility is something that you should do because it's a moral imperative, because you have a legal obligation, and because it makes commercial sense for these 3 reasons. फिर हम उनको बताते हैं कि क्या उनकी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं ब्रीफली, क्योंकि हमको झगड़ा नहीं करना किसी से, बट उनको भी पता रहना चाहिए कि हवा में बात नहीं चल रही है। और फिर उसके बाद हम उनको बताते हैं कि क्या एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म में इस टाइम पे, एंड ऊपर से, और अगर उनको ज्यादा जानकारी चाहिए तो वी विल रीच आउट टू देम विद कॉन्क्रीट इनपुट शुड दे बी इंटरेस्टेड, एंड देन वी एक्सपेक्ट देम टू गेट बैक टू अस। उसके बाद हम उनको करीबन 10 दिन बाद एक रिमाइंडर भेजते हैं। अगर फिर भी उन्होंने नहीं जवाब दिया तो हम सोशल मीडिया पे टिकअप करते हैं मैटर को, ट्विटर वगैरह के थ्रू, ट्विटर लिंक्डइन के थ्रू, और फिर हम उनको अगर मान लो 1 महीने तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत ही विशी वॉशी रिस्पॉन्स आया है, तो फिर उनको लीगल नोटिस भेजते हैं और 15 दिन का पीरियड देते हैं। अगर उन्होंने नहीं रिस्पॉन्स दिया 15 दिन में तो फिर हम मैटर को सीसीपीडी के कोर्ट में लेके जाएंगे, या अगर सीसीपीडी के कोर्ट से नहीं हुआ तो फिर रिट पिटिशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। दैट इज द लीगल अप्रोच दैट वी हैव इन माइंड। ओके, दिलीप जी हो गया आपका? आपको और कुछ जानना है? No, thank you. Okay. Ma'am, I also have one query. Ashwit, I will just come back to you. There are. Could you wait? एक बार आप लोगों को जब शबनम नाम बोलेंगे तब आप बोलिए, क्योंकि बीच में अगर बोलेंगे तो सबका फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। There is somebody by the name of Realme Narzo. I don't know who that is, but बहुत टाइम से हाथ ऊपर है। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने एंड से। यस मैम, गुड इवनिंग सर। आपका नाम क्या है? गुड इवनिंग। मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं रोहिणी दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
थैंक यू फॉर राहुल सर और थैंक यू फॉर आईवे। मेरी आवाज जा रही है मैम? हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। और मैं गुजारिश करता हूँ सर कि समाधान भी होना चाहिए, क्योंकि कई एनजीओ बातें करती है लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता है सर। तो मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ सर कि कुछ तो समाधान होनी चाहिए। मेरा 2 ही सवाल है सर बस, और 2 बहुत मेजर साइड है सर। एक बैंकिंग का है, आईबीपीएस का साइड सर। वो हम लोग ना रिजल्ट देख सकते हैं ना कोई, आईबीपीएस पे हम कोई काम ही नहीं कर सकते सर। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है पूरे देश में, लोग हम अप्लाई करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उसको पूरा बिना कैप्चर के सर हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ सर। और दूसरी है सर, दिल्ली गवर्नमेंट का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है सर, जिसमें सारे सोशल जस्टिस रिलेटेड मतलब जो भी फॉर्म भरता है, जैसे लाइक डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर रहा हूँ सर। मैंने अभी अप्लाई किया था तो उसका स्टेटस चेक कर रहा था, उसके लिए भी कैप्चर आईडी मांग रहा था सर। तो उसको वो उसका एक भी कुछ सेकंड वर्क सर, नहीं मैं कर सकते थोड़ा सा सर। आई वाज ऑन अ डिफरेंट कॉल, सो इसलिए मैं आपका मिस कर गया। आप कैप्चा की ही बात कर रहे हैं तो मैं समझ गया, मगर कौन से के कॉन्टेक्स्ट में आपने स्पेसिफिक, आपका नाम क्या है बाय द वे सबसे पहला? राहुल 2 चीजें हैं, आईबीपीएस की नहीं, वेबसाइट इनका और नाम ई क्या डिस्ट्रिक्ट है? पोर्टल। मेरा नाम श्रवण कुमार है सर। श्रवण कुमार। हाँ, जी तो सर। कैप्चा का प्रॉब्लम है, सॉरी हमारा आप बोल रहे थे। हाँ, जी कैप्चा सर। का प्रॉब्लम है 2 पोर्टल्स पे। एक तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है एंड सेकंड इज आईबीपीएस की वेबसाइट। ठीक है, तो इन पे कैप्चा है ही नहीं या फिर कैप्चा नहीं है, नहीं कैप्चा है कैप्चर है नहीं सर, मीनिंग कि उसको डाल ऑडियो नहीं कैप्चा सकते। है ही नहीं, या ऑडियो, और या फिर अच्छा ऑडियो ऑडियो में नहीं कैप्चा? है सर, ऑडियो में नहीं है सर, वो इमेज के थ्रू होता है सर, वो देखना होता है सर उसको। आप देख समझ के गया, बिना देखे हुए डाल ही नहीं सकते सर आप। गॉट इट। और इतनी बड़ी श्रवण जी साइट है ऑफिस। सर। यस सर। और बात जोमेटो स्विगी की चल रही है सर, मुझे मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है सर कि मैं नया नया मोबाइल चलाना 2017 से चला रहा हूँ। उस जी समय से मैं जोमेटो स्विगी से खाना ऑर्डर कर लेता था सर। जी लेकिन आईबीपीएस इतना मेजर सर साइट है सर, इतनी इतनी जी क्रूशल साइट है सर, वो अभी तक मतलब एक्सेसिबल नहीं। तो उनसे तो अच्छा है ना सर जोमेटो और स्विगी, कि हम 2017 में जब मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था फिर भी मैं खाना ऑर्डर कर लेता था सर। नहीं सर, खाना ऑर्डर करने के लिए आईबीपीएस का चलना बहुत जरूरी है। जी सर, ये तो बात सही है सर, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ सर कि और मैं दिल्ली गवर्नमेंट के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की बात किया सर, वैसे बिल्कुल आप लोग भी कभी देखिएगा बहुत सारे स्टेट का पोर्टल अभी भी एक्सेसिबल नहीं है सर। तो पहले क्यों ना बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट वेबसाइट को हम लोग ठीक करें सर, उसके बाद पब्लिक बिल्कुल। पब्लिक को हम ठीक करेंगे सर। नहीं, सब कुछ साथ साथ ही करना रहेगा श्रवण जी। जो जी सर। जो जो बात करने को तैयार है, जो करने को तैयार है, उसके साथ करना जी पड़ेगा। सर। बात ये जी है, सर। और जो आपने सबसे पहले वाली बात की कि काफी लोग बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं बट एक्चुअल में कुछ करते नहीं है। आई एम जी ग्लैड यू हैव ब्रॉट अप दैट पॉइंट। उसमें 2 बातें हैं। एक तो जो लोग ये कॉज टेकअप कर रहे हैं, इट्स बेसिकली अ मूवमेंट। So it's not जी something that can be done just by us saying that okay, today we are going to जी take up this cause. It requires support from you. It requires an active push from you. आपको हमें input देने रहेंगे, आपको हमारे साथ बैठ के पुश करते रहना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर को। हमको सर्विस प्रोवाइडर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लॉयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। रातों रात तो होने नहीं वाला ये। नहीं सर, और ये बिल्कुल तो सर। मैं जी आपको सर। प्रॉमिस भी नहीं करूंगा कि नहीं सर, नहीं सर। रातों रात कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जी बट साथ साथ अगर हम करके करेंगे तो 100% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें इंप्रूव होगी ही होगी। जी सर। मतलब मुझे ठीक है सर, अब बहुत अच्छा, मतलब पहले भी कई मैं एक्सेसिबल वो, लेकिन मुझे लगता है सर कि जो बड़ी बड़ी साइड है सर उसको तो ऑब्वियसली ठीक होना चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस एक बड़ी साइड है बिल्कुल। सर, आप लोग खुद मानते हैं सर। बाकी बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का सर। आपका ईमेल श्रवण जी? यस सर। SHAR SHAR WAN हाँ KRS KRS 1998 @gmail.com सर। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, शुभम देशमुख। शुभम देशमुख, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने एंड से। Okay. I'll just go to Ghanshyam. अंशम आसुदानी जी? No, the full name is not here. It's just Ghanshyam GH. Okay. Okay, so I'll go to Omkar Pavaskar. आपको भी अनम्यूट करना पड़ेगा अपने एंड से, प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ सर मेरा नाम ओमकार पावस्कर एंड आई एम फ्रॉम गोवा सर मीन्स मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टुडेज टॉपिक बट आई थिंक दिस प्रॉब्लम माइट फेसिंग every blind people this problem face so sir मेरा problem ये है कि like I did not able to like पे ऑनलाइन बिकॉज सर मुझे जो बैंक वाले हैं ना जब मैंने लाइक ऐसे 5 to 6 बैंक आई हैव ट्राइड लाइक कैनरा बैंक एंड पीएनबी वो लोग जब भी अकाउंट ओपन करने के लिए जाता हूँ दे लाइक रिफ्यूज मी टू गिव डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन यस सर ओमकार एक काम करिए आप मिशन एक्सेसिबिलिटी पे अपना कांटेक्ट डिटेल्स डालिएगा मैं आपको गोवा के एक बंदे से कनेक्ट करता हूँ करवा दूंगा ओके सर आपका ईमेल आप ईमेल भेजिएगा missionaccessibility@gmail.com हाँ ओके सर राहुल वी कैन कनेक्ट हिम टू अबिलिनो टू अबिलिनो sir means whenever I ask no for them for like debit card के लिए वो बोलते हैं कि you should have to give a like writing में आपको देना पड़ेगा कि like अगर गलती से कुछ सॉल्व हो जाएगा कोई इशू नहीं हो जाएगा कोई बड़ा इशू नहीं सर ओके सर थैंक यू also George sir and Shabnam ji I will have to leave shortly so how many more people are there in the We list have do around सर 6 of सर them. दिस इज शुभम One सर second, मुझे one थोड़ी सी second, बात Shubham, करनी one थी second. Yeah, Shabnam, how many people? 6 around 6 right now. 6. Cool. Yeah, Shubham, go for it. I can note down if like. Let's see 5 minutes I'll stay उसके बाद फिर देखते हैं Sir, excuse me, sir. Can I speak? Can I sir raise some points? Vikas, can we take other questions first so that they also get a chance? We still have 6 people waiting. आपने already एक बार बोला है ना? मैम मैंने बोला है लेकिन कुछ इश्यूज है मैम जो अभी और बचे हैं I'll just come back to you. Others are waiting. Shall I speak, ma'am? Please go ahead, हाँ जी. या सर मैडम मैं शुभम देशमुख मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सबसे पहले मैडम थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव मैं कुछ इश्यूज रेज करना चाहूँगा मैडम एक है गो एयरलाइन का जो ऐप है उसमें जब हम वेब चेक इन मैं एंड्रॉयड की बात करूंगा सर उसमें जब हम वेब चेक इन करते हैं तो सीट सिलेक्शन में एक्सेसिबिलिटी इशू है सर वो बोलता नहीं है टॉप बैक कौन सी सीट है और जो लास्ट वन चेक बॉक्स है सबमिट करने से पहले जो हम उनके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी चेक बॉक्स टॉप बैक ऑफ करके सिलेक्ट करना पड़ता है तब वो चेक होता है ओके तो ये गोयर का हो गया सर अब दो इशू सर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है एंड्रॉयड का उसके बारे में है पहला सर एग्जिस्टिंग इशू जो किसी ने रेस किया था कि जो पासवर्ड चेंज करने और यूजर नेम चेंज मतलब यूजर नेम फॉरगॉट करता है कोई तो तब जब कैप्चा होता है सर उसके अगेंस्ट में OTP नहीं है जब हम लॉगिन करते हैं तो तब कैप्चा के अगेंस्ट में OTP आता है ठीक है लेकिन OTP आना चाहिए कैप्चा के अगेंस्ट जब हम यूजर नेम फॉरगॉट करते हैं फिर पासवर्ड फॉरगॉट करते हैं तब ओके और सेकंड इसके अलावा दो इश्यूज कहे थे ना आपने IRCTC ऐप में दूसरा कौन दूसरा सा बताऊं सर हाँ जी दूसरा इशू ये है सर जनरल में इशू ये है कि जब हम टिकट बनाते हैं ऐप में हो या फिर वेबसाइट में हो तब हम 16 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं लिख सकते ओके ठीक है यूजुअली हम क्या करते हैं फिर अगर किसी का नाम बड़ा हो तो हम लास्ट नेम का पहला कैरेक्टर लिखते हैं और पूरा फर्स्ट नेम लिखते हैं तो ऐसा करते हैं लेकिन जब किसी का ई कार्ड पे नाम ही पूरा मेंशन हो तब उसके पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है जैसे मेरा एक दोस्त है देखिए जनरल इशू हो गया शुभम जी ये एक्सेसिबिलिटी वाली बात नहीं हुई है नहीं राहुल हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है लेकिन सर प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब हमारा ई कार्ड बनाया ना सर हमने तो ई कार्ड पे हमारा पूरा नाम मेंशन है और जब तक हम पूरा ऐप में नाम नहीं लिखते तब तक वो प्रोसेस जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाता कंसेशन नहीं ले पाएंगे कंसेशन ही नहीं ले पाता मैं समझ रहा हूँ मगर ये एक्सेसिबिलिटी इशू थोड़ी है कि पूरा नाम नहीं डालने देता ये एक नॉर्मल ऐप का डिजाइन का इशू है
नहीं बट ये नॉन एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं ना ये इशू लाइक नहीं ये इशू इन जनरल है सर। हाँ No, ये no. जनरल इश्यूज हम इस एक्सरसाइज से बाहर रखते हैं। आई मीन आई Okay. अंडरस्टैंड लाइक आपकी Yeah. कंसर्न तो वैलिड है और उस वजह से आपको काफी कठिनाई भी आती होगी, बट ऐसे हाँ, अगर हम इश्यूज लेने लगे तो फिर तो हजारों इश्यूज हैं, तो इसलिए लेट अस कीप द स्कोप ऑफ दिस एक्सरसाइज कन्फाइंड टू एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, ताकि एक हमारा एक वेल कंटेन्ड ऑपरेशन रहे। नहीं तो फिर yeah. हम सभी कुछ अगर लेने लगेंगे तो फिर बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। Yes sir, got it. हाँ So shall I move next one? यस एक ऐप है सर एंड्रॉइड का MI स्टोर, Xiaomi का। ओके इसमें सर प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है वो ग्राफिक्स में दी गई होती है, सो वो टेक्स्ट में होनी चाहिए। एक सेकंड, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शाओमी MI स्टोर। MI स्टोर, ओके गॉट इट। एक ऐसा भी हमें करना चाहिए जॉर्ज सर, अगर आपके पास भी रिसोर्सेज हो कि ये सारी प्रॉब्लम, कैन यू हियर मी जॉर्ज सर? Yes, I can. हाँ, if it is possible, we could also work together on figuring out a way to document all of these issues on a web page somewhere. जो भी ये 50-100 issues हैं, like we will take them up one by one. But if we have a list, then we can circulate it within our networks to product designers and developers, and you never know, how the word spreads. It may actually get to the right people, and we, may be able to address these issues through that route also. So if you have someone, or maybe on the Eyeway website itself, if you could create a web page which documents all of these issues in one place, then we can really spread it widely Yeah, to we can our explore. networks. We can explore this. Yeah, it's a good idea. Yeah. हाँ बताइएगा, आप और भी कुछ बोलना चाह रहे थे शुभम जी? हाँ सर, अब और 3 एप्लीकेशंस के इशू है सर। हाँ एक है सर माई जियो का ऐप, पहले तो थोड़ा बहुत एक्सेसिबल था भी, लेकिन राइट नाउ इट इज करंट, मतलब पूरा कंप्लीटली अनएक्सेसिबल है सर। बहुत लैग करता है और स्क्रीन रीडर हैंग हो जाता है उसमें। Rahul, I think I suggest जो हमने already ले चुके हैं, let's not take them again. I was thinking, my Geo already we have written to them, so हाँ so that way. But अभी तो नोट कर ले, Right. बाद में फिल्टर कर लेंगे ना। yes मेक सेंस। आप बोलते जाइए शुभम जी, मैंने नोट कर लिया है ये। या और सेम वन फॉर कोरा आल्सो। अच्छा, सेम वन। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो भी हैंग हो यही जाता इशू है? सर। हाँ, हैंग हो जाता है सर स्क्रीन रीडर, इसमें काम Okay. बहुत कम करता है स्क्रीन। या ओके लास्ट वन सर, एक ऐप है सर रेख्ता, उर्दू वेबसाइट है, उसका ऐप है एंड्रॉइड का रेख्ता। स्पेलिंग REKHTA? या ठीक है। इसमें क्या इशू है सर, जब हम कुछ पढ़ते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए मैं कोई पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे हर वर्ड के लिए नेक्स्ट स्वाइप करना पड़ता है। पूरा पैराग्राफ एक साथ नहीं पढ़ता है स्क्रीन रीडर। मैंने कई बार लिखा उनको, समझ गया। लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला सर। Does not read one para at a time. हेलो सर। अच्छा, मुझे अभी जाना होगा actually. I genuinely need to get going. I'm really sorry about this, but today is quite a busy day. So I hope you will excuse me, Amal and Turab. I hope you'll be able to take things forward from here. Yeah, no problem. I have a tight deadline today. Otherwise, I would have loved to say let me just say thank George sir once again for the opportunity, and I'll definitely get down to addressing as many of these concerns as we can, and we should collectively ideate on what we can do to document these and to take them up both individually with service providers as well as at a systemic level. But rest assured कि ये बस बातें वाली बात नहीं है कि हम आए बस नोट किया चलेगा. Something or the other we will do about it, and even if people don't respond, at least we will have that clarity कि ये तो इतने बदतमीज है कि respond भी नहीं करते हैं. That in itself is a valid input to have, क्योंकि काफी बार तो हम इनको रीच आउट ही नहीं करते ये सोच के कि क्या फायदा होगा इस बात का. Yeah, and the point is that the solutions are not in our hand, but our
No, Task is to push. Our task is to Yes. raise the issue and push for it. Yeah, Rahul, Yes. just if you can add that people have to take the initiative. Like if you can just add Yeah. that. ये सब Yeah, करने में yeah. बहुत time और patience चाहिए होता है, so have patience मतलब. No, but one thing which if you so one thing I would just say that आप लोग को जब हम template देंगे तो please आप लोग की भी responsibility कि आप लोग उनको लिख के follow up कर रहे हैं. हम लोग तो करेंगे but then क्योंकि हम कितनों का कर सकते हैं ना, और आपको फॉलो अप भी करना है, और अगर नहीं जवाब आ रहा तो आप हमको कॉल करिए, बोलिए मैं आगे क्या करूं, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे. बिकॉज हमारे लिए शुरुआत से एंड अपने हजारों मतलब अपने डे जॉब के साथ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट अगर आप विलिंग हैं तो फिर हम एंड तक बात को लेकर जाएंगे. इस बारे में भी आप निश्चिंत रहिए. ठीक है, चलिए फिर मैं निकल रहा हूँ. थैंक यू सो मच अगेन. Thank you, Rahul. Thank you, Rahul. Yes. या ओके, बाय बाय. सर अब एक चीज, एक फीडबैक देना था सर आईवे के लिए. हाँ. सर जब हम कुछ कभी मैं ट्विटर पर ट्वीट करता हूँ सर किसी एक्सेसिबिलिटी इशू के लिए, साथ में आईवे को टैग करते हुए, लेकिन मुझे सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आईवे की ओर से कोई रिस्पांस मिला उस ट्वीट पर, या फिर मैं चाहता हूं सर कि आईवे भी कोई इनिशिएटिव ले जब हम एक्सेसिबिलिटी इशू को लेके कभी ट्वीट करते हैं तब. ये आप शुभम बोल रहे हैं? यस सर. शुभम बोल रहे हैं. या वी विल टेक अ नोट ऑफ दिस. या रियली सर, क्योंकि कई बार मैंने आईवे को टैग किया है मेरे ट्वीट्स में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आईवे की ओर से कोई इनिशिएटिव लिया गया. राइट. फ्रेंड्स ऑफ हाईवे जो ट्विटर हैंडल है सर, उसके लिए. या जी. थैंक यू. Sure, thank you, Shubham. Yeah, who's next? Amar, you are not to. And I will write my details in chat. My contact number and email ID and all. Yeah. Sure. Okay. Note, please. Yeah, I'll then mute myself because ये अपने Jaws बोल रहा है, मैं mute कर देता हूँ. मैं हाँ ठीक है. हाँ. Who's next? Okay. Nitin Sharma. Hello. Good evening, everybody. Hi, Nitin. Hello. Am I audible? Yes, you are. Yeah. Oh, hello, sir. Sir, मेरा एक पॉइंट है. मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है. ये जो आफ्टर लॉकडाउन एक्टेक के जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जो बायजूस है, अनअकैडमी है, तो मेरे एक अबाउट 5 मंथ बिफोर एक बैड एक्सपीरियंस रहा बायजूस का. मैंने कोर्स उनसे बाय किया था. उनका एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, और उन्होंने अपना एक टैबलेट के फॉर्म में, टैबलेट में एप्लीकेशन डाल के अपना स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं था. उन्होंने बहुत परेशान किया. मैंने ट्वीट किया, वो WC3 स्टैंडर्ड सब. टैबलेट पे टॉकबैक चलता है उनके. सर टॉकबैक चलता है, टैबलेट में भी उन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, वो एक्सेसिबल नहीं है टॉकबैक के साथ एप्लीकेशन. नहीं, मैं आपको एक काम करना, आप missionaccessibility@gmail.com पे एक मेल डाल देना. मैं आपको कनेक्ट करता हूँ उन बंदों से जो ये बायजूस का टैबलेट यूज कर रहे हैं. सर बायजूस का टैबलेट सैमसंग का टैबलेट है सर. बायजूस सिर्फ वो भेजता है ना. हाँ. तो वो जो प्रोडक्ट है उनका, जो उनके स्टडी मटेरियल है, वो बिल्कुल भी जो वो टेबल बना रखा है. मैं आपको उसका सॉल्यूशन, ये यूजेबल है, लोग करते हैं, मैं आपको बताऊंगा. ओके सर. मैं आपसे बात कर लेता हूँ. मैं आप कनेक्टेड हैं भी सर हम. मैं आपसे ना. डन. Excuse me, sir. Yes. Is there anyone who is using my Jio? नितिन जी की email ID? Sir, it's Nitin. Okay. Is there anyone who is using my Jio? My Jio has already been taken up. It's a problematic area. We have already taken it up. Not only problematic, sir. Too much problematic. You know. Yeah. We know that. We have taken note of that. Okay. Thank you. Excuse me, sir. Sandeep. Yes. Sir, ma'am, just I have another question. Just छोटा सा क्वेश्चन है, मैं वो भूल गया. सर जस्ट मुझे जियो टीवी के बारे में बोलना था, बिकॉज पहले वो बहुत एक्सेसिबल था मैम, और अभी और अभी वो पूरा अनएक्सेसिबल है. इनफैक्ट जियो के ऑलमोस्ट सारे एप्स अनएक्सेसिबल है. सो जियो बेसिकली, ओके, मैं जियो के बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ सभी को जो भी जियो में इंटरेस्टेड है. जियो एज अ कंपनी कंप्लीटली डिनाई करती है कि हमें राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट एप्लीकेबल है और हमें इस लॉ से एज इन हमें एक्सेसिबिलिटी नॉर्म से कंप्लाई करने की जरूरत है. उसका रीजन ये है क्योंकि जो अपने रूल्स में गाइडलाइंस मेंशन है वो गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स है.
तो उसका नाम देख के उनको ये लगता है कि हमें एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आज तक उन्होंने कभी इसके बारे में कुछ किया नहीं है। पहले भी काफी लोगों ने कोशिश करी है, डॉक्टर सैम ने पर्सनली काफी कोशिश करी है जियो को कन्विंस करने की, पर हुआ नहीं है, पर हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। ओके सर, यस सर। बट सर एक्चुअली क्या था, फर्स्ट वो बहुत एक्सेसिबल था, बाकी इनफैक्ट सारे ऐप्स जियो के, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Yeah, I think we've noted the issue. Let's move on. Yeah, Thank let's you. move on. Yeah, Yes, thank sir. you. Thank you. Thank you. There's somebody by the name of Poco M3. I don't know, POCO. There is no Poco. name. Poco. Can you unmute yourself, please? Yes, ma'am. Yes. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, you are. Yes. This is Gopal Krishna Sahu from Odisha. सर मेरा कुछ सवाल ये है कि जब हम पेटीएम वीजा कार्ड से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के द्वारा इशू किया है जो वीजा कार्ड से अगर हम कुछ रिचार्ज वगैरह या फिर पेमेंट करते हैं तो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म पहला बताइए, एंड्रॉइड, आईओएस? जी सर, वो एंड्रॉइड है सर, एंड्रॉइड के बारे में बात कर रहा हूँ। जब पेमेंट करते हैं तो फिर वो जो ओटीपी आता है वो सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आता है, मतलब 30 सेकेंड्स के लिए। उसके अंदर में हम जब ओटीपी जब डालते हैं तो फिर उसका टाइमिंग खत्म हो जाता है और पेमेंट नहीं कर पाते हैं। ये सारे एक इशू है। और सर दूसरा इशू ये है कि जब हम अमेजन पे पेमेंट करते हैं वो वहाँ पर कहा जाता है कि सरप्राइज रिवॉर्ड इनसाइड स्क्रैच इट, तो स्क्रैच करने में वो ऑलरेडी नोट कर लिया है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और तीसरा वाला जो इशू है सर वो जोमेटो का फूड ऑर्डर करने के लिए अगर हम सर एक डिश अगर ऑर्डर करें उसके बाद उसका मतलब 4-5 डिश वो सेम डिश अगर ऐड करना चाहें तो उसका जो प्लस माइनस वाला जो आइकन वो थोड़ा सा इनएक्सेसिबल रहता है। जोमेटो में वैसे भी इश्यूज हैं, काफी इश्यूज हैं। जी सर। तो और सर आखिरी सर जो आखिरी वाला है सर, अगर हम कहाँ पर मतलब कहाँ जाना चाहते हैं ओला उबर यूज़ करके या फिर जोमेटो में कुछ वो अगर हम जहाँ हैं उसका डिलीवर मतलब डिलीवर के लिए एड्रेस जो सिलेक्ट करते हैं सर, वो जो गूगल मैप कहता है कि वो पिन करो कहाँ रहते हो, वो जो ये पिन का ऑप्शन हमें नहीं मतलब इनएक्सेसिबल होता है सर। वो पिन एक्चुअली क्या है ना, वो बेसिकली आपको विजन यूज करके आपको बेसिकली होता क्या है, वो लोकेशन सपोज अभी आपने मान लीजिए डाल दिया ब्लॉक सी, ठीक है, अब ब्लॉक सी में घर तो बहुत बने हुए हैं, मान लीजिए आपका चौथा मकान है तो मैप पे वो व्यू दिखाता है, वहां से आप उसको कर सकते हो। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है गूगल के लिए भी कर पाना कि वो उसको कैसे करे, बट फिर भी इसके लिए एक बार सजेस्ट करूंगा आपको कि गूगल की जो डिसेबिलिटी आंसर डेस्क है उसको एक बार लिख के देखिएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये था मेरा सवाल। सर आपकी ईमेल आईडी एक काम और करेगा, आपका ईमेल आईडी missionaccessibility@gmail.com पे डाल दीजिए। नहीं बता दीजिए ना मेरे को, एक बार लिख भी लेता हूं एक मिनट। जी सर, गोपाल कृष्ण GOPAL KRUSHNA S45 कौन सा 45? S सियरा S जी S सॉन्ग, ठीक है, S45 @gmail.com। ठीक है। I think you need to note that the Krishna is KRUSHNA. Yeah, it's a yes sir, it's KRU sir. Okay. Yeah. And thank you so very much sir for this initiative action. मैं हमेशा ये मिशन के साथ रहूंगा। मैंने सुना जब मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा सर ये हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Okay. There is somebody Moto G. There is no, yes, please. हेलो, नमस्ते मैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए आप। मैं सुभाष शांगड़े बोल रहा हूँ। सुभाष शांगड़े, अच्छा। बोलिए मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ये मेरे पास मोटोरोला जी एंड्रॉइड मोबाइल है, मुझे ये नहीं आता चलाने, बिल्कुल ही नहीं आता। तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, तो चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, लेकिन बिल्कुल ही नहीं आता था। बाजी आप कहाँ रहते हैं? मैं अहमदनगर महाराष्ट्र में। और एक प्रश्न और है, हमारी जो दूसरे भी उनको भी मालूम नहीं कि टॉक बैक से ब्लाइंड व्यक्ति एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर सकते, इतना बेसिक भी नहीं मालूम। मैं अभी तो भी सुन रहा था ना, वो तो बहुत बढ़िया आसमान की बात है, ऐसा लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। नहीं, ये देखिए अवेयरनेस इशू है। और जॉर्ज सर ट्रेनिंग के लिए तो आई थिंक कुड वी आस्क हिम टू कॉल ऑन हाईवे हेल्प डेस्क। Yeah, they can actually, I think NAB does conduct training on using of mobile phones. So आप हमारे Eyeway हेल्प डेस्क पे कॉल कीजिएगा 1800। मेरे पास है
वहां पर कॉल करके आप पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको ट्रेनिंग ले सकते हैं इस विषय में। हाँ, और एक बात, अभी आप बहुत अच्छा करें, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक ही मुद्दा मत रखिए, और हमारे जो डिसेबिलिटी व्यक्ति के सब मुद्दे एक एक करके ऐसे लीजिए ऐसा। सुभाष जी देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, हम लोग हैं टोटल 3 जन करने वाले। हाँ जी, हमें अपनी जॉब भी करनी है और हमें ये काम भी करना है, तो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम बहुत सारे इश्यूज उठा लेंगे तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो पहले इस इश्यू को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये जब अगर कभी लाइफ में हमारे जीते जी खत्म हो गया तो हम दूसरे इश्यूज उठाएंगे। तो अभी इस वक्त ये आज का चर्चा जो है ये एक्सेसिबिलिटी के ऊपर है, जो लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू शुभम जी। थैंक यू। ना नहीं है, पता नहीं, नीचे होंगे देखो। Now who's next? Ashwit, you wanted to ask something. There are no hands raised, but Ashwit had asked something, and Vikas also wanted to speak again. Ashwit, please unmute yourself. Unmute कीजिए अपने आप को। I'm audible? हाँ जी। So मैम, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो मेरा क्वेश्चन मैम, जो मेरा क्वेश्चन है ये एंड्रॉइड ऐप के ऊपर ही है, लेकिन ये ऐप लाइब्रेरी पर बेस्ड है। जैसे कि हमारे जो एप्स होते हैं बुक्स रीडिंग करने के लिए, जैसे कि बुक शेयर और सुगम्य पुस्तकालय। सो मैम, इनमें से जो एक ऐप है सिंपली रीडिंग, जो कि एक एंड्रॉइड ऐप है, उसमें ये दिक्कत आ रही है। सिंपली रीडिंग। अच्छा ठीक है। हाँ मैम, सिंपली रीडिंग में ये दिक्कत आ रही है, जैसे कि सबको विदित है कि जैसे हम जब ईपब टेक्स्ट में बुक्स डाउनलोड करते हैं तो उसको मतलब बहुत कम मिनट लगते हैं कि वो डाउनलोड हो जाए। और जबकि अगर ऑडियो बुक्स की बात करते हैं तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि वो मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं आपको बीच में कट ऑफ कर रहा हूं, इसके लिए आई थिंक डेजी फोरम ऑफ इंडिया को लिख दीजिए। दैट्स राइट। Yeah, you can write to contact Daisy Forum of India. उनका number offhand we don't have, but we can send it to you. What's your email ID? मेरी email ID है ashwitkavidyal@gmail.com. ASHWIT. Out of Moto E7 PB87 power raised hand. Soon. More button. हेलो सर। अश्वित आपका आवाज कट गया उसके बाद। अश्वित, हेलो सर। फिर से प्लीज, वी आर टॉकिंग टू अश्वित, प्लीज others could keep quiet for the moment, please. Thank you. Yeah, अश्वित बोलिए। ASHWIT। सर अश्वित, ASHWIT अश्वित। हाँ। कविदयाल, KAVIDAYAL। ओके, कविदयाल @gmail.com। जी सर, मैंने उनकी जो सिंपली रीडिंग का डेवलपर है उनकी ईमेल आईडी पर भी सर बहुत बार मैसेज किया, लेकिन ना उनका कोई फीडबैक आया ना इंप्रूवमेंट हुआ। क्योंकि जो ऑडियो बुक्स हैं, अगर हम डाउनलोड होने की बात करें तो मिनी सेकंड्स में ही कह दे रहा है कि गो टू लाइब्रेरी, और अगर हम जाते हैं तो वहां पे बुक्स नहीं मिलती हैं सर। नाउ वी विल राइट आपका डेवलपमेंट जो है ना, we will या give, तो मैं डेवलपमेंट बोलूं या जो भी बोलो आप उसको, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वगैरह सब डेजी फोरम ऑफ इंडिया के पास में। so we will write to we are also part of Daisy Forum, so we will inform the relevant people. Yeah. And we will mark a copy to you so you can take the discussion forward. ठीक है? Yes sir. Okay, thank you Ashwit. Who's next? There was Moto E7, Moto E7. Moto E7. There was some. म्यूट करें और बोलें। I don't think this person knows that the name is Moto E7. There's somebody else who was speaking in the middle, right? That was just they were on unmute. That is why. Okay. Vikas wanted to say something, or we are done with it? No, Vikas wanted to say something. Vikas Gupta. Vikas, unmute कीजिए अपने आप को। I'm sorry to interrupt. I'm Gopal Krishna Sahu. After a few sometime, please maybe कुछ थोड़ा सा एक इशू भूल गया, वो कहने के बाद जरा मुझे मौका दीजिएगा, मैं जरूर कहूँगा। थैंक यू। आप बताइए अभी, आप बताइए। हेलो विकास। हाँ जी मैम, कैन आई स्पीक? हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एंटरटेनमेंट की जो एप्स है, तो सर ने कहा कि हॉटस्टार पे काम चल रहा है, तो क्या Z5 पे कुछ काम नहीं चल रहा? जैसे Z5 जो ऐप है
तो उसमें भी एक प्रॉब्लम ये आती है, जैसे कोई वीडियो चल रही है फॉर एग्जांपल, हम कुछ देख रहे हैं, तो अगर उसे रिवाइंड करना है या बैक करना है तो उसको हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। आपकी वैसे आवाज सर नहीं आ रही है कौन सा विकास। प्लेटफॉर्म है? आप Z5 कौन सा एंड्रॉइड पे यूज करते हैं या एंड्रॉइड पे। अब क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? तो उसमें जैसे कोई हम कुछ भी देख रहे हैं ना, तो उसमें जैसे हमें रिवाइंड करना है या आगे करना है, तो वो हमें साइटेड की हेल्प लेनी पड़ेगी, हम खुद नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा टॉकबैक बहुत स्टक करता है उसमें भी, कहीं ना कहीं थोड़ा टॉकबैक क्या करता है? स्टक करता है थोड़ा थोड़ा सर। ओके ओके, हैंग होता है। ओके, थैंक यू। यस सर। और सर जो फेसबुक है वो भी अब धीरे धीरे इनएक्सेसिबल होती जा रही है, क्योंकि बीच में एक तो ऐसा आया था कि फेसबुक पर टॉकबैक बिल्कुल चलता ही नहीं था, फिर अभी तो अपडेट आया, ठीक हो गया, वो धीरे धीरे इनएक्सेसिबल होती जा रही है फेसबुक पे टॉकबैक के थ्रू। हेलो हेलो। Isn't Facebook part of Google now? No sir, Facebook is different. Not too sure about that, sir. No, how can the Facebook will be separate company? हेलो सर। फेसबुक में आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने क्या बोला फेसबुक में? The talkback is becoming inaccessible gradually, he's saying. Yes sir. Sir, हेलो सर। in previous version talkback was completely inaccessible, but now there was an update and Facebook talkback. I mean, talkback is a software, no? So like, what? No, what he's saying is using talkback, he's finding it now difficult to navigate through and use Facebook. Yes sir. So in other words, Facebook is not accessible on Android. आप कुछ स्पेसिफिक इश्यूज बता सकते हैं? बिकॉज़ iOS में तो पूरा एक्सेसिबल है, इसलिए मुझे लाइक एंड्रॉइड में अगर आप कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे फेसबुक चला रहे हैं, तो अगर हम स्वाइप राइट करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि टॉकबैक जो है बोलता ही नहीं, बहुत ही स्लो बोलता है, या पता नहीं कब बोलेगा, कितने मिनट बाद बोले, ये होता है। और जैसे कई बार हम रील्स चलाते हैं, विकास जी आप कौन सा TTS यूज कर रहे हैं साथ में टॉकबैक के? डिफॉल्ट वाला? नो सर, मैं ऑटो TTS के साथ एलोक्वेंस और वोकलाइजर यूज करता हूँ। अच्छा। और I think it is not an accessibility issue. It has more to do with your TTS and screen reader issue, not an accessibility. और सर इग्नू की जो वेबसाइट है वो भी, मतलब उसमें जैसे अगर फॉर्म वगैरह भरना है तो हम इंडिपेंडेंटली नहीं भर सकते, हमें साइटेड की हेल्प लेनी पड़ती है इग्नू की वेबसाइट पर। ठीक है। I think we've noted this. Thank you, Vikas. Yes sir. Shabnam, there are two other this Moto E7 not unmuting. I don't think that person knows. And then there is आपका वीडियो भी ऑन है, आपको कुछ सवाल पूछना है या कुछ चैलेंज शेयर करना है Moto E7, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने एंड से। Alt A। नहीं, फोन पे है ना सर। There, I think this guy, sorry, I forgot his name. Noda India. What is his name? Kishore. Yes. Good evening. Yeah. मैंने वैसे तो चैट में लिख दिया है about banking apps and एक रैपिडो नाम का ऐप है जो ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है। Discussing Kishore. We are already discussing with them. Okay, ठीक है। तो this is it and thank you very much once again for holding this session and all the panelists. Thank you very much for taking this initiative. Thank you, made it all the worth. क्वेश्चन था, मैं पूछ सकता हूँ सर? बोलिए सर। सर मैंने अभी हाल ही में अपना सर, am I audible? हेलो। Yes, you're audible. सर मैंने अभी हाल ही में अपना अकाउंट खुलवाया था जुपिटर में, ठीक है, बैंक अकाउंट खुलवाया था, सेविंग अकाउंट जुपिटर में, जो डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करा रहा है और फेडरल बैंक की एजेंसी है। तो सर इसमें क्या है कि जैसे मुझे वीडियो KYC करानी है, तो मुझे वो डिनाई कर रहे हैं कि तुम ब्लाइंड हो, तुम ब्रांच जाके करो और हम तुम्हारी वीडियो KYC नहीं कर सकते। तो जबकि इनकी ब्रांच है नहीं सर, केरला में है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग है, और मैं उन्हें मेल रख रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि हम आपको फिजिकल KYC भी नहीं करा सकते। विकास एक काम करिए आप, एक सजेशन देता हूँ। विकास ही नाम है आपका। CMS कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम cms.rbi.org.in, इस पे जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करिए जुपिटर के अगेंस्ट में, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अच्छा, वो रिजॉल्व कर देंगे सर। Can you repeat the URL once more? CMS. CMS Customer Management System .rbi.org.in. IN for India. सर पोर्टेबल एक्सेसिबल है या वो भी उसमें एक्सेसिबिलिटी बैरियर है? यार थोड़ा कर लेना, मतलब इतना भी एक्सेसिबल नहीं है बट ठीक है, यूजेबल है। ओके, थैंक यू। Anything more? No, again, the same guy, Moto E, but then. Wow, I think that's fantastic. Yeah. We have been able to address everybody's questions. I think that's great. Quite good. Right. Amar and Turab, thank you very much for taking the time, and I thought it was quite a meaningful session. Absolutely. And they were. Thank you for the opportunity, sir. And at some point of time there was close to 66 people, I think. Oh wow, that's a good number. Yeah. Sir, I'm extremely sorry to interrupt. Yeah, there is somebody who's interrupted now. Who's? Sir, this is Gopal Krishna from Odisha. Just I forgot the last issue. सर when हम iMobile पे यूज करते हैं तो वहाँ पर सर लॉगिन करने के लिए या फिर बैंक सिलेक्ट करने के लिए Android, iOS? जी सर, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ सर। जब iMobile पे यूज करते हैं तो फिर उसमें टॉकबैक ऑफ करके साइटेड पर्सन का हेल्प लेना पड़ता है। जब बैंक सिलेक्ट करते हैं, लॉगिन वगैरह करते हैं, तो सर उसमें थोड़ा सा वो एक्सेसिबल होना चाहिए सर। ये था हमारा आखिरी इशू सर। थैंक यू सो मच। लॉगिन नहीं कर पा रहे हो? जी सर, लॉगिन करने में प्रॉब्लम, और फिर जब हम बैंक सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब यूपीआई रजिस्टर्ड जो बैंक है, तो वो बैंक सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है सर। वो टॉकबैक ऑफ करके साइटेड पर्सन का हेल्प लेना पड़ता है सर उसके लिए। मतलब अगर हम एक कोई बैंक सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद भी हमारे यूपीआई यूज कर सकते हैं ना सर, जहाँ पर हम रजिस्टर्ड नंबर जहाँ पर जिस बैंक पे होगा, तो इसलिए वो बैंक सिलेक्ट नहीं होता सर। मतलब जैसे कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते हैं, वो कह रहा है कि वो बैंक सिलेक्ट करो फिर उसके बाद यूपीआई चालू होगा, तो वो जो बैंक सिलेक्ट नहीं होता सर। ठीक है, थैंक यू सर। Sorry sir, I think you were saying something. Yeah, so thank you so much, and I think we will, if there is anything that we will explore that possibility of documenting these all these issues on a website, so that we can update as and when problems are being solved. I think we can also put it up there on the same website, and then let's talk about it offline. Sure. Yeah. And as Rahul suggested, and let's see as many people as we could bring together to collaborate and make this a movement. As you very rightly said, I think this is too big a ocean for 3 people to swim through. So I think we need to mobilize people to actually kind of be part of this. Yeah, like we can share the Thank you for having us. Yeah. Eyeway, I can personally say that मैं अपने कॉलेज डेज से Eyeway से कनेक्टेड हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है Eyeway से। So definitely without Eyeway हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। So thank you for having us. It's more like coming back home. So yeah, thank you very much sir, for the opportunity, and it was great. Yep. Yep. So we'll take this forward and let's continue the conversation. Sir. Yeah. Sir, first of all, thank you so much for Eyeway for conducting this wonderful webinar. So just I wanted to ask you, I am Omkar Pavaskar. So how can we get this type of wonderful webinars information by the Eyeway? Because this link I got, which I got from my friend actually. So just yeah. So if you can leave your number with us. Okay. If you can leave your number with us, then we will every time there is a webinar, this Eyeway encounter happens once a month. And if there is anything else that happens, we will WhatsApp you. Okay. So can I please tell you my number, WhatsApp number? Yes, please. So okay, 944. Yes, go ahead. Yes, sir. So 944 900. Okay. 6822. Okay, we'll add you to our WhatsApp. Okay, ma'am. Okay, thank you so much, ma'am. Yep, and I'd like to also, is there any queries on Facebook which you see? Just a moment.
Hello. Yes. Good evening. Hi, who's this? No. Sorry. Voice is very low. No. Yeah. Network issue. Any queries? No, nothing. No. Yeah. So Shabnam, so I'm just going to close Facebook now. Thank you very much, Facebook, for all of you on Facebook who are participating. Thanks for signing in. Yeah. Yeah. Thank you so much, guys. Yeah. So so we'll carry this conversation forward, and let's try and draw in as many people as possible. Awesome. And you know, some more people from the south maybe who could be part of this whole enterprise. Sure, and let's have this conversation more often so that you know, more and more inputs can come in, and you guys are probably in the best position to kind of drive it. So we'll be happy to support and be part of it. Yeah. Sure, sir. Thank you so much. We Yep. obviously reach out to you for any guidance. Yeah, we'll certainly be Yep. in touch with you.